Hey guys, what's up? Welcome back to this new video. In this video, we will trace down each and every variable being used here, like how the output of print all pairs. If you put in let's 2, the output is 0 0 0 1, and I guess 1 0 and 1 1, something like that. Why do we get these as output? Why? So in last video I failed to explain it, but finally have understood it. In this video, we will go through that only. So without erasing that, let's get into this. So let me explain. For example, you put in a value of n equals to 1. Why do I show it here? Let me just show you in the laptop itself, okay? Hey guys, so we are on the laptop. So this is the same problem which I wrote on the whiteboard, and here you can see I have added a counter variable, or you can say count. So it basically counts how many times this loop has run. So this has to run how many times? If the input is 2, it should run how many times? Can you guess? It should run 4 times. Okay, that's why I run it. Ctrl Shift D, run and debug. Okay, so it ran 4 times as expected. Close it. All right. So it ran how many times? 4 times. How and why did it happen? Okay. Let's break it down. Let's get inside it and let's try to break it down. So here. Do you understand the concept of count, right? It is initially set to 0, and here you can write this like this, or you can simply write count is equal to count is equals to count plus 1 7. So basically this. So counter variable is updating itself by 1 every time this loop is running, every time it is getting into activity. So let's actually explain this. So we have two for loops, outside for loop and inside for loop. The outside for loop is based on a variable I, which starts from initialized it to 0, and it runs till n. It never reaches n, like n minus 1, but till n. And the iteration happens by I is equal to I plus 1 every time. Every time the inside this is executed, it goes back and reaches here to do it. You understand this part, right? And inside there is another for loop which is independent of outside for loop, and for this reason only I called it a simple nested loop. And here then we have a console log statement, and this very statement executes how many times? N square times. The outside time complexity of for loop is O of n, inside is also O of n, but overall time complexity which will affect this statement and this statements, the innermost inside statements, to have a time complexity of n square. Time complexity is nothing but the number of operation a function has to perform in order to complete a task. So it depends only, time complexity depends on number of operations. That's all. Okay. So let's try to run it with 0. So since 0 is a special case here. Why? Because if we have set n equals to 0, that means 0, like initially when I equal to 0 is smaller than 0. It is a false case. So inside this thing will not execute. Damn, there will be no activity inside of the for loop. Okay, it will not do anything. It will not even pass the first step of getting in the loop, so that nothing would happen, and the counter variable will still be set to 0 only, and this will get output. Similar with 0 and all the negative numbers also. Like let's try it with 0. Okay, Ctrl Shift D, and we run it, and here, okay, where did it go? Debug console. So you see 0 is the number of times the innermost console log statement is executed, or innermost statements are executed. Okay, clearly understandable. So what about the negative numbers? So let's do it with -1, and I think it will do the same. Run and debug, and debug console. So 0 is the number of times innermost. Okay, same things are happening. Cool. What about when you put it to some values other than non-zero or negative? Let's put it 1. In this case, what do you think would be the output? Okay. Where did it go, man? Debug console. So it ran 1 time, and it gave us I equals to 0 and j equals to 1. It ran 1 time, so I equals to 0 and j equals to 1. 1 is the number of times the innermost console log statement has been executed. Okay, it makes a little bit of sense, right? But it doesn't make that much of sense. How is it even happening? What goes into this shit to make it happen? So we set n equals to 1. That means here, if you notice, I is equals to 0
and I is less than 1, because now n is equals to 1. So I'm just making you see like what's happening actually inside. So is it true? Like 0 is, yeah, it is true. That means this this for loop will go inside and make the inside thing to do some activity. Okay, so after it enters inside, now we have to solve this thing, then only it can completely execute it and then go then increment itself and assign itself. Okay, now again we encounter a for loop. We need to solve this, then only we can go and finish this and go outside, right? Now here let j equals to 0. J, what is the value of n? N is not getting changed, n is always 1. So similarly, like the above case, it will also go inside and execute the console log statement. The console log statement has I and j as its variable. So what do you think I is right now? I is 0 only, nothing. I has not been incremented because we are अभी भी हम लोग अंदर में stuck हैं. इसी वाले case में we are stuck with this inside thing only. So I is still equals to 0 only, no worries. What about j? J we just now encountered, it was 0 only. Okay, j has not been incremented, no. So 0,0. Okay, what about this counter? Yeah, it will also get it will also update itself. What do you mean? Herein the counter variable will become 1. Acha, yes. So count is no more 0, it's 1. Yeah, count is equals to 0. So let's simply write it as count plus plus. Let's delete this. Okay, understood. Okay, makes sense. What about now? Now we have reached the innermost thing. What about now? Now this for loop will it will go on incrementing itself because it has reached the last statement. It will just increment itself. Like oh, please increment me. I want to just go again on the ride again, and just have fun. So it will just increment itself. Now j will become from 0, it will become 1. And now at the same time j will get compared with n. Okay. So since 1 is not greater than 1, so that means it will no more get inside this. It will just stop. Since the entire activity of the for loop is stopped, now this outside for loop uncle will be like, what? The activity inside is completed. I need to increment myself. This is the outer people, the older people, the parent people are kind of lazy. So now they will again iterate itself from what was 0, it will become 1. Okay, yes guys, yes. So I will get compared with n. Wait a second. It was 0 initially. Yeah. So now I will become for 1 we are doing now. For I will become 1. So again, can you say for I equals to 1 will I equals to 1, like it is saying 1 is greater than 1. Is it a true case or false case? False case, right? So again nothing will happen. No activity will be expected inside, and this entire for loop will exit. So can you tell me what was the output of this? How many times it got executed? It got executed only 1 time. And mathematically we can also see this inside was getting executed 1 time. The outside was also getting executed 1 time. So like as we know, like the overall time complexity of this should be n square times. Now n value is 1, so 1 square is 1. So this will execute only 1 time, right? Yes. So that's why we got this output. What output? Let me show. Like this is an output. Like 1 is the number of times it will execute, and 0,0 because the value of I and j were 0 only. Now what happens? I'm getting hungrier. What happens? Actually hungry. What happens when we put n equals to 2 in print all? Like here, if it was 2. Let's see. So how many output it should give? If n is equals to 2, n square, it's 2 square is equal to 4. So this thing will execute 4 times and with different permutation combination. Why? Because we are using for loops, and for loops we are using for loops with variables, and they will get changed every time the loop runs. I and j will get changed because they are getting iterated every time. So we should give 4 output. So we get, let me just close this, shift D, run it. See, 4 is the number of times the innermost loop is getting console log statement is getting executed, and these are the 4 output. 0 we got in the first try, we got what? 0, 0. So these are the outputs we are expecting this time, like 0, 1, 1, 0, 1, 1. And how do we get there? We'll explain all of that in this video. So let's again go. Counter is set to 0.
and counter will be iterated every time the innermost loop is getting executed. Innermost statements are getting executed, and we have a function print all with parameter n. We have two for loops, outside for loop and inside for loop. Outside for loop with I and inside for loop with j. They both are independent of each other. There is no interchanging of intermixing of outside for loop variable and inside for loop variable. So this is kind of relatively easy to understand. Yeah, okay, makes sense. Okay, first iteration, when what is the value of n here? 2. So can you say 0 is greater than 2? 2 is greater than 0? Yes. So will it go inside the loop? Will this inside, can we expect an activity inside? Yes, we can expect an activity inside. So it will go again for j is equals to 0, j less than 2. Is it correct? Again, yeah, j is equal to 0 now first case mein, yeah. So yeah, it will again go inside the activity. So what will be the value of I? I is equals to 0. And what is the value of j? J is also equal to 0. Why? Don't you know? Like अभी तो j कंपेयर किए 0 के साथ. ओ हाँ, और I पे कंपेयर किए थे, तो आई तो 0 ही रहने वाला है ना, 0 एंड अच्छा ठीक है. तो काउंटर वेरिएबल एक्टिवेट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा. हाँ, काउंटर वेरिएबल हो जाएगा. अभी क्या 1 हो गया हम लोग का. ठीक है, तो it will exit the loop for now. Do you think it will exit the loop for now? No. What will happen next? Why will not it exit? Because this statement is again valid. Like as it has अभी यहाँ पे पहुँच के हिट कर लिया, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो j है वो क्या होगा, इटरेट होगा. कितना होगा, j इक्वल्स टू, अब हो जाएगा j इक्वल्स टू 1. मतलब 1 इज स्मॉलर देन 2. या एक बार फिर से घुसेगा. ठीक है, अब j का वैल्यू कितना है, j का वैल्यू हो गया 1 और i का वैल्यू 1. i का वैल्यू 0 ही है क्योंकि वो बाहर अंकल के पास हम लोग गए नहीं है, एक्टिविटी नहीं हुआ अंकल बाहर का. ठीक है, तो i का वैल्यू कितना है, 0 ही है. j का वैल्यू कितना है, j का वैल्यू हो गया 1. ठीक है, तो दूसरा वाला जो लूप होगा उसका आउटपुट क्या आएगा, 0,1. तुम लोग को देखे होगे कि 0,1 आउटपुट आया था. देखो 0,1 आउटपुट आया था. और ठीक है, और फिर ये काउंटर वेरिएबल हिट होगा तो काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1 से लेकर 2 हो जाएगा. अभी अब हो गया 2. ठीक है, क्या अभी फिर से ये j है ना, इटरेटर फिर एक्टिवेट होगा. क्या तुम बता सकते हो j का करंट वैल्यू कितना है अभी? j का करंट वैल्यू, तो j का करंट वैल्यू हो गया है हम लोग का. अच्छा तुम मुझे बताओ j का वैल्यू रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा, तुम बताना. j का करंट वैल्यू कितना है, j का करंट वैल्यू है 1 था ना. हाँ, j का करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, j का करंट वैल्यू 2 होगा. अब फिर 2 को कंपेयर करेगा, 2 इज ग्रेटर देन 2. नो, सो ये अपडेट भी नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा जैसा का तैसा छोड़ दिया जाएगा. j अभी भी 1 ही छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, ओके. ओ नो, j का वैल्यू कितना कर दिया जाएगा, 2 कर दिया जाएगा. ठीक है, ओके. और 2 से कंपेयर किया जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2. सो नो, इट्स नॉट ग्रेटर देन 2. सो इनसाइड में कोई एक्टिविटी नहीं होगा, सीजेस टू एग्जिस्ट. जूम आउट. फिर ये अंकल जगह बाहर, हाँ क्या हुआ, तो अंकल को बोलेंगे अंकल वो इनसाइड में जो एक्टिविटी हो रहा था वो बंद हो गया क्योंकि वो जो है ना वो 2 इज ग्रेटर देन 2 पूछ रहा था, तो फॉल्स था. इस वजह से उसको गवर्नमेंट ने आके ताला लगा दिया और वो रन नहीं हो रहा है. तो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ मेरे पास क्या कर सकता हूँ मैं. तो पहले n का वैल्यू क्या था 1, i का वैल्यू क्या था 1 और n का वैल्यू क्या हो गया 2. So since Johnny, since we have completely done the activities here, मतलब अबे यार, मतलब पूरा का पूरा लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट कर गया ना, कर गया. तो अब क्या होगा, ये i का वैल्यू इटरेट होगा, i का वैल्यू बढ़ा जाएगा ना, i का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो i का वैल्यू बढ़ा देता है. कितना बढ़ाता है, i इक्वल्स टू 1 कर देता है, i इक्वल्स टू 1 कर देता है. 0 से कर दिया 1. क्या 1 इज ग्रेटर देन 2? या 1 इज ग्रेटर देन 2. तो ठीक है, एक बार फिर घुसेगा इनसाइड द फॉर लूप. ठीक है, और फिर फोर लूप फिर अंदर घुसेगा. बोलेगा ये भी तो वापस इसको जिंदा करेगा. उसको बोलेगा कोई बात नहीं, मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं अपना पैसा लगाता हूँ. ठीक है, मतलब बाहर वाला फोर लूप बोलेगा j इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. ओके, मेक सेंस. क्या होगा पहले वाला केस में, ये तो रन होगा फिर से है. हाँ, फिर से j का वैल्यू कितना सेट कर दिया गया, फिर से j का वैल्यू 0 सेट कर दिया गया. पहले कितना था, j का वैल्यू सेट किया हुआ था 2. अभी क्या कर दिया गया, j का वैल्यू सेट कर दिया गया, j का वैल्यू फिर से 0 सेट कर दिया गया. पहले तो मैंने इसको दोबारा जिंदा किया. ठीक है, और फिर j का वैल्यू कंपेयर किया जाएगा कि n का वैल्यू कितना है. अभी n का वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं आया है, तो 0 इज लेस देन n. ऑफ कोर्स 0 इज लेस देन n, 2 है. तो अंदर घुसा और रन किया लूप. i का वैल्यू कितना है 1 और j का वैल्यू कितना है 0. तो थर्ड वाला आउटपुट क्या आना चाहिए, 1,0. लेट्स सी क्या 1,0 आता है. देखो 1,0 आया. फिर काउंटर वेरिएबल अपडेट कर दिया गया, तो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया शायद, है ना. अब 3 बार ही चल चुका है. Like intuitively by mathematical calculation we can understand this will run only one more time, but let us see one more time, right? So यहाँ पे लास्ट काउंटर वेरिएबल हिट हो गया. i का काउंट का वैल्यू कितना हिट हो गया, 3 हो गया. काउंट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, है ना. अब फिर वो j के पास जाएगा, j को इटरेट करेगा. j का वैल्यू कितना था, j का वैल्यू 0 था, j का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. क्या 1 इज ग्रेटर देन 2? या
तो फिर से अंदर घुसेगा, यस। तो कंसोल डॉट लॉग घुसा और अंदर में क्या बोलेगा हम लोग को, आई का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। अब फोर्थ आउटपुट क्या आना चाहिए, फोर्थ आउटपुट आना चाहिए 1,1। देखो फोर्थ का आउटपुट है 1,1। ओके सो फिर काउंटर वेरिएबल क्या हिट हुआ, काउंटर वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा 0 से लेके 1, हाँ काउंटर वेरिएबल 0 से लेके 1 इंक्रीज हो गया। So now it will again increase the j to how much? Now j will be increased from j will be increased to 2. j का वैल्यू कितना बढ़ा देगा 2, लाइक लास्ट टाइम की तरह j का वैल्यू फिर से 2 बढ़ा देगा। फिर 2 को 2 से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। 2 से बड़ा है नहीं, फॉल्स केस है, 2 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता है। ओके सो इस वजह से ये फिर से सीजेस टू एग्जिस्ट। तो फिर ये वाला पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ का खत्म हो गया। कहाँ पे जाएगा अब ये यहाँ पे जाएगा, आई अंकल फिर से जाएगा, हाँ मेरे को इटरेट करना है अपने आप को। तो पहले कितना था 1, अब करेगा 2, फिर से सेम केस आ गया नीचे वाला की तरह, क्या 2 इज ग्रेटर देन 2, क्या 2 इज ग्रेटर देन 2, थिंग इज फॉल्स, दैट्स वाई नो मोर एक्टिविटी। इस पे भी पूरा का पूरा ताला लग गया, ठीक है। अब बताओ काउंटर वेरिएबल कितना हो गया, काउंटर वेरिएबल 4 हो गया। और आउटपुट्स यू ओनली सॉ कि कैसा आउटपुट्स आया है, आउटपुट्स वर 30 एंड these. Yes. Let me just zoom out and let me just show. These are the outputs 0,0. अरे देखो 0,0 किसकी वजह से हो रहा था, इनसाइड फोर लूप की वजह से। 0,1 वो भी किसकी वजह से बस हो रहा था, इनसाइड फोर लूप की वजह से। फिर यहाँ पे सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब पूरा का पूरा इनसाइड फोर लूप पूरा डजन एग्जिट एनीमोर, क्योंकि उसका पूरा काम खत्म हो चुका है। फिर बाहर वाला बाहर वाला फोर लूप एक्टिवेट्स इटसेल्फ, उसकी वजह से इनसाइड फोर लूप में हम लोग को आता है 1,0। फिर इनसाइड फोर लूप एक और बार रन करता है ना, एक और बार रन करता है इनसाइड फोर लूप ना, जे वाला लूप। फिर उसकी वजह से 1,1 आता है, फिर फेल हो जाता है, हार्ड फेल हो जाता है उसका। फिर वो एग्जिट होता है। फिर अंकल के पास जाते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि अंकल को रिवाइव करने का, बट अंकल तो तब तक बोल चुके होते हैं, क्योंकि 2 = 2 हो नहीं सकता है इसी वजह से। So 4 is the number of times inside for loop will execute. You can understand the overall tile complexity of this is n square times this will run, n times this will run, n times the overall times that this inside for loop inside statements will run will be n square times. Counter variable ऐसे काम करता है, आपने देख लिया कैसे काम करता है, हर एक इटरेशन में वो अपडेट किया जाता है, इसी वजह से हमें मिल जाता है। So let's try to do it with 4. और 4 हुआ तो उसमें कितना आएगा, should be raise this so to run it। तो 4 होने पे तुम कितना 16 आउटपुट आएगा, 16 आउटपुट आएगा। तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ तक ओह गॉड आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस। यहाँ तक एक बार इनसाइड फोर लूप जिंदा रहा, उसके बाद इट सीजेस टू एग्जिस्ट। उसके बाद फिर बाहर वाला अंकल ने कितना हुआ इसमें से 1 2 3 4 बार रन किया इनसाइड फोर लूप। उसके बाद फिर वो पॉटी कर दिया उसके बाद वो फिर बाहर निकला। उसके बाद बाहर वाला जो फोर लूप था वो रन किया कितना बार, वो भी इतना बार ही रन किया, वो भी 4 बार ही आई गेस रन किया। उसके बाद फिर आउट हो गया। उसके बाद फिर अंकल जी फिर रिवाइव किया इनसाइड फोर लूप को, क्योंकि उनके पास बहुत औकात था, क्योंकि इस बार एन का वैल्यू हम लोग 4 सेट किया। फिर वो भी शायद वो भी 4 बार ही इटरेट किया डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई एंड जे के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद फिर लास्ट टाइम वो रन किया, है ना, लास्ट टाइम वो भी रन किया 4 बार, फिर वो आउट हो गया। 4 या 16 टाइम्स। मतलब तुम क्या बता सकते हो कि मतलब जब एन का वैल्यू 4 होता है तो क्या क्या होता है। एन का वैल्यू 4 होता है तब फक होता है दिमाग में, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब एन का वैल्यू 4 होता है तब मौत आ जाता है। जब एन का वैल्यू 4 होता है, हाँ जब एन का वैल्यू 4 लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल एन का वैल्यू 4 ही लेते हैं फिलहाल, तो जो फोर लूप है वो कितना बार चलता है, 4 बार चलता है। इनसाइड वाला वो भी शायद 4 ही बार चलता है, 16 टाइम्स। मतलब समझ लो, आई एम एबल टू अंडर फक आई ड्रॉप्ड माय लैपटॉप। एन का वैल्यू कितना चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, समझ गया। So this is how it works. 16 times is the number of times. You're getting an understanding of this, how this works. Hopefully you're getting. Sorry, your teacher is kind of immature and beginner kind, so he's unable to explain it in that full clarity. But with time, I'll be able to explain it full clarity. So this is how the simple for loops work.